Today, as you sit with yourself all alone, turn attention inwards. In this room, only you are there. You have your own company at this point of time. This is the me time, time with myself, time for myself, because I'm the most important person in my life. So I need time, I need care, I need communication with the self. So today, as I said, I explore my inner world. What do I see inside on the screen of my mind? As I step into my inner world, what all do I see? Lot of thoughts, lot of images, fear-based thoughts, useless thoughts, unproductive thoughts, and some bordering on negative thoughts. Give yourself time to see and understand what is going inside. There's a lot that's happening in your inner world which is out of your control. Just check, just observe, just watch. सिर्फ देखने का काम करो अंदर जो चल रहा है, जो इमेजेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो लोग हैं, उन सबको देखो क्या दिख रहा है. बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है और कुछ कुछ है जो अच्छा है. आज जो अच्छा नहीं है, let's see that. We will pass no judgment. हम उसको देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे. अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे. हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे. We will simply watch. ये अभी मेरे मन के अंदर थॉट्स चल रहे हैं. कुछ टाइम के बाद I'll have different type of thoughts. Tomorrow there'll be a new set. We keep changing. We keep creating. So right now, let's do one small exercise. All this
baggage of unwanted thoughts, I dispose it of very consciously. See all this stuff in your mind as unwanted, as useless, as trash. जो कुछ मन में चल रहा है, जो काम का नहीं है, आज उसको मन से खाली करके dispose it off, throw it away. It's not part of your mind. जैसे गार्बेज को डस्टबिन में फेंकते, in the same way, imagine yourself throwing this unwanted stuff in the mind. You're throwing it away. You're disposing it off. ऐसे ही इमेजिन करो कि आप उसको थ्रो कर रहे हो. इमेजिन करो. मेरे काम की चीज नहीं है. अपने को बोलो, मेरे काम की चीज नहीं है, इसलिए मेरे मन में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए. That's why I am throwing it away. Throw it. Mentally do this exercise of throwing the inner garbage of the mind. और जैसे ही आप इस गार्बेज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ask yourself, how are you feeling? If you are feeling unburdened, आपके मन में जो हेवीनेस थी, जो बर्डन था, जो प्रेशर था, जो एंजाइटी थी, कम हुई. Did you release it? अगर अभी भी कुछ रेसिडुअल रह गया है, throw it further. दोबारा से करो. Dispose it off. And continue to do it till you feel unburdened. You will be able to realize the difference. आपको समझ में आएगा पहले मन कैसा था, अभी मन कैसा है. पहले भारी था, अब हल्का है. You'll be able to feel the difference. Stay with this feeling where you are unburdened.
और अब एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट हम इस इमेज के साथ फील करेंगे। स्क्रीन पर आप सबके सामने एक इमेज है। इस इमेज को देखकर मेरे अंदर से पहला थॉट कौन सा आता है? What is the first thought which comes into my mind when I see this image? It's the thought of lightness. Now, create this beautiful thought. I am light. I am unburdened. जो आपको इमेज में दिख रहा है वो सेम चीज मेरे साथ हो रही है। आई एम फीलिंग लाइट। It has nothing to do with body weight. It has only to do with the burden of the mind. With this image, create your own lightness. फिर से अपने को थॉट दो, I am light. This feeling of lightness is what will make me happy, contented. जब मेरा मन हल्का है तो मैं खुशी में नाच रही हूँ। I'm living life. I'm celebrating life. So give yourself this thought और एक डीप फीलिंग में अपने को लेके जाओ। I am light. These feathers are a representation of lightness. I'm not flying because of the feathers. I'm flying because I'm light inside. What a beautiful feeling to be light, to be living, to be celebrating, to be joyful, to be liberated. This is me,
and burden free. Hold on to this image and continue to feel the same. I am. So with this beautiful feeling, come to the awareness of this room. इस ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ, एक लाइटनेस के साथ, with a smile on your face, let's put some wonderful thoughts in our mind. मेरा मन हल्का है, मेरा मन शांत है, अब मैं अपने मन में अच्छी बातें डाल सकती हूँ. So I hope all of you experience the lightness. If you want to share your experience, you can type it in the chat box. सबसे बड़ा चैलेंज आज के वर्ल्ड में टू बी बर्डन फ्री, टू बी लाइट. हम किसी भी कैटेगरी में हैं, whether we are students, whether we are working professionals, whether we are in the family setup, एक चीज जो सबसे चैलेंजिंग है, lightness. Okay. So with this beautiful feeling, we can start with today's session on success and goal setting. For the ones who attended the session last time, जिन्होंने पिछले हफ्ते का हमारा लेक्चर अटेंड करा था, उनको आई थिंक बैकग्राउंड पता होगा. हमने सक्सेस की डिस्कशन करी थी और बहुत ब्रीफ में गोल सेटिंग के ऊपर डिस्कशन करी. तो आज मैं गोल सेटिंग के ऊपर फोकस डालूंगी. अब गोल सेटिंग के लिए हमें चीजें कैसे शुरू करनी है, आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट इट. Okay, and this is something which is going to help us. This is something which is going to help us in achieving our goals. First thing first, हम सब लाइफ में एक गोल लेके आते हैं. What do I mean to say? From childhood, we all have some vision, some deep dream, some goal for our own self. So first thing which I'm talking about right now, let's talk about the main goal of my life. अब इसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी चीज को जब हमें सीरियसली समझना होता है, if we have to actually understand something, given the seriousness of the issue, given the enormity of the issue, so we need to give it time. हर अच्छी चीज की क्रिएशन टाइम मांगती है. No one can create great things in this world without time. तो पहली चीज, you have to give time to your own self. So what's the first thing which I am saying? Sit with yourself. अब ये काम हमें बहुत मुश्किल लगता है. We are not used to sitting with ourselves. बहुत easy काम है हम सबके लिए sitting with others and chatting about things which are not having any value for us. But अगर हम seriously अपने बारे में सोचते हैं, तो हम seriously अपने ऊपर थोड़ा सा time spend करें. As I just said in the meditation session today, I am the most important person in my life. So the most important person in your life, doesn't that person need your time? अपने से पूछो, आपको अपने को टाइम नहीं देना चाहिए?
So the first thing which I'm saying is sit with yourself. Sit with yourself means there should be no rush, there should be no hurry. ठीक है, हम में से बहुत लोग प्रेयर्स करते होंगे और पूरे दिन में बहुत सारे टास्क करते होंगे। आपने लोगों को प्रेयर्स करते हो ऑब्जर्व करा? मैंने करा। देयर माइंड इज रेसिंग। उनको लगता है कब प्रेयर खत्म होगी और हम काम करना शुरू करेंगे। और आपको पता है दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, क्योंकि उनके लिए प्रेयर एक फॉर्मेलिटी है, एक रूटीन है, एक चीज है जो करनी होती है, एक चीज एक्सपीरियंस करनी होती है, ऐसी फीलिंग नहीं होती। तो व्हेन आई से सिट विद योरसेल्फ मींस आप घड़ी नहीं देखो कब 10 मिनट खत्म होंगे। गिव योरसेल्फ टाइम, सिट विद योरसेल्फ एंड टॉक टू योरसेल्फ। अब आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट डू आई टॉक अबाउट? अब बात करने को तो बहुत सारी चीजें हैं। आज आपके ऊपर बात करते हैं, आपके गोल के ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू, विद योर गोल, विद योर लाइफ। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको बोलूं आप अकेले, ऑल अलोन यू आर सिटिंग, और मैं बोलूं आप मुझे बताओ व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ इन दिस लाइफ। मुझे नहीं बताना, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। आप अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, व्हाट इज दैट यू वांट इन योर लाइफ फॉर योरसेल्फ। हो सकता है आज आपको आंसर्स ना मिले, quite possible you may not get answers today, but ask yourself what is it that you really want for yourself in life. अगर आप में से किसी का आंसर सिविल सर्विसेज है, किसी का आंसर कोई गवर्नमेंट जॉब है, किसी का आंसर कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब है, वॉट एवर यू हैव, किसी का टीचर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा हाउ सिंसियरली यू फील अबाउट योर गोल, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस गोल फॉर यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस पॉइंट, इम्पोर्टेंस होती है गोल की, because every student talks about goal and every student doesn't achieve the goal. So importance will decide your sincerity, your dedication, and most importantly, importance will decide your sacrifices for the goal. जिसको लाइफ में कुछ बनना होता है, उसको लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, because that goal is so important, sacrifices become small. तो मैं आपसे आज सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं कोई भी आंसर नहीं मांग रही हूँ, और आपको भी आज आंसर नहीं मिल रहा है, सो इट्स क्वाइट ओके। आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस लाइफ? आपको अपनी लाइफ से अपने लिए क्या चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस गोल फॉर यू? आपके लिए ये गोल कितना महत्वपूर्ण है? थर्ड क्वेश्चन, हाउ स्ट्रांगली यू फील अबाउट इट? आप इस गोल के लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हो? ये 3 क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, और आपके एग्जाम्स खत्म हो तो यू कैन थिंक अबाउट इट। मैं क्यों बोल रही हूँ, हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, एंड आई विल से वी स्पीक इट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। हमसे गोल पूछा जाता है, हम बोलते हैं मुझे ये बनना है, पर बनने के लिए हम कर क्या रहे हैं? How seriously I am working towards attainment of that goal? आपने पूछा कभी अपने आप से? So 3 questions I am putting in front of you, and with these 3 questions write your goal. आपको इन 3 क्वेश्चंस में ये समझ में आ जाएगा आपका गोल है या नहीं है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितने सीरियस हो। दिस यू विल अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या बोला, सिट विद योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, और थर्ड चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, राइट व्हाट यू आर थिंकिंग।
और मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ, राइट योर गोल, डोंट थिंक अबाउट योर गोल। मैं आपको बताऊंगी गोल सेटिंग के बारे में रिसर्च हुई, आई थिंक इन अमेरिका। So they were trying to understand the link between goal setting and success. तो एक रिसर्च हुई वहाँ पे, they said only 1% of the people are having goals in their lives. They have set goals for themselves in their life, and they are the ones who were successful in life. मैंने आपको पिछले सेशन में एक चीज एम्फसाइज करी थी, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन सक्सेस। मैं सेम चीज एम्फसाइज कर रही हूँ विद एन इम्पोर्टेंट रिसर्च विच हैज बीन डन। आपके पास जब तक गोल है नहीं, इन राइटिंग नहीं है, उसको आप रोज देख नहीं रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस। तो मैं बोल रही हूँ आप रोज सुबह उठो, अपने से पूछो व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ, आर यू हैप्पी इंडल्जिंग इन ऑल मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। बहुत अच्छा लगता है मोबाइल में हमने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, फ्रेंड्स के साथ हम बाहर घूम आए, वी वॉच्ड अ न्यू मूवी, हम किसी ट्रिप पे चले गए, हमने ट्रैकिंग करी, हमने पार्टी करी, बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन सेज एंजॉय लाइफ, आई आल्सो से एंजॉय लाइफ, बट एंजॉय लाइफ के बाद टेंशन तो नहीं हो जाती है, प्रेशर तो नहीं आ जाता है, स्ट्रेस तो नहीं हो जाता है, अब मेरा लाइफ में क्या होगा, एग्जाम नहीं क्लियर हुए तो, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इसको एंजॉयमेंट बोल रहे हो, दिस इज नॉट एंजॉयमेंट। तो अपने आप से पूछो, is this the real joy which I'm getting from indulging in all these temptations, all these distractions, or the real joy is from achieving success? सक्सेस के साथ कंटेंटमेंट आती है, सक्सेस के साथ जॉय आता है, सक्सेस के साथ फीलिंग ऑफ प्राइड आती है। यू हैव टू चेक कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मेरी लाइफ दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ के ही बीत जाएगी? आस्क योरसेल्फ। हम में से कितने लोगों ने कितने लोगों की इंटरव्यू सुनी होंगी, बायोग्राफीज पढ़ी होंगी, सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी होंगी? क्या मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मैं उनकी स्टोरीज पढ़ के खुश होती रहूं, कि मैं अपनी लाइफ को भी एक सक्सेस स्टोरी बनाऊं? आपका क्या प्लान है अपने बारे में? आस्क योरसेल्फ। हमें सक्सेस स्टोरी बनना है, हमें एग्जाम्पल बनना है, हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है, हमें मोटिवेशन बनना है। If this is my goal, if this is why I'm here, that is I've come so far. Come so far means 14 years of schooling and 3 years of graduation and something more after graduation. If this is your goal, then definitely you have to achieve something in life through goal setting. तो आज का पहला काम मैं आप सबको दे रही हूँ। आई थिंक यू शुड राइट डाउन, यू शुड टेक नोट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से जितनों को ऐसा लगता है हम सुन के ठीक हो जाएंगे, सुन के मोटिवेट हो जाएंगे, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, जब तक आप दूसरे के साथ बात कर रहे हो तब तक आप टेम्परेरीली मोटिवेटेड रहते हो। when you read about the successful stories of other people, आप टेम्परेरीली मोटिवेटेड होते हो। जब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन की टेक्निक नहीं आई है, until unless you know how to pull yourself, how to motivate yourself, you will not be able to move forward. तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने से बात करो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन लाइफ। मोबाइल बार बार पूछो, बार बार पूछो। किसी को लगता है पता है, आई नो मोबाइल इज अ डिस्ट्रैक्शन, पता करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो स्मोक करता है उसको पता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी वो स्मोक कर रहा है, उसको टेंशन होती है, वो स्मोक करता है, टेम्पटेशन होती है, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए पावर चाहिए।
So don't say, I know I actually should not be spending so much time on your mobile. Ask yourself, mobile important है, phone important? अपने से आप बात करोगे ना, आपको एक realization आए. Realization is very important. I'll give you the importance of realization through a story. There was a student, बिल्कुल नॉन सीरियस था पढ़ाई में, ठीक है. स्कूल में ऑल द टाइम ही यूज्ड टू गो डूइंग ऑल काइंड ऑफ यूजलेस थिंग्स, रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, कुछ नहीं करता था, टाइम वेस्ट करता था. उसके पेरेंट्स बहुत परेशान. उन्होंने उसको टीचर के पास भेजा. उन्होंने कहा आप जरा इससे बात करो, इसको थोड़ा समझाओ, ये लाइफ में कुछ करे, कुछ बने, इसको कुछ समझ में आए. तो टीचर एक टेबल के इस साइड कुर्सी पे बैठा था. ऑन दी अदर साइड ही टोल्ड दैट स्टूडेंट आप बैठ जाओ. और उस रूम में वो दोनों थे. और जब टीचर उससे बात करना शुरू करने वाला था, देन अ sparrow in the room flew from one corner of the room to the other corner of the room. तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, कहते देखा? स्टूडेंट ने कहा हाँ. कहते क्या देखा? ये जो चिड़िया थी ना, इधर से उधर उड़ के गई. सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये चिड़िया क्या करती है पूरे दिन, उसकी लाइफ क्या होती है? कहती खाती है, पीती है, सोती है, घोंसला बनाती है, बस दैट्स ऑल. So the teacher said to the student, the purpose of human beings is much bigger than this. हम खाने पीने सोने मस्ती करने नहीं आए इस दुनिया में. वो एक पॉइंट था, that one line which the teacher said. एनिमल्स क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, बहुत डिफरेंस है. Because we are superior mammals, superior species in on this planet. उस स्टूडेंट को रियलाइजेशन आ गई. For the first time in his life, he realized I'm here for something. मैं खाने पीने सोने घूमने नहीं आया हूँ इस दुनिया में, मैं कुछ करने आया हूँ, कुछ बनने आया हूँ, सोसाइटी को कुछ देने आया हूँ, इस कंट्री के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ करने आया हूँ. उसकी लाइफ चेंज हो गई. And that person later became something great. ये जो रियलाइजेशन होती है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड होता है, और उस रियलाइजेशन को आने में पूरी लाइफ टाइम लग जाती है. दैट्स द चैलेंज, दैट्स द आयरनी. रियलाइजेशन होती एक सेकेंड की है, पर वो एक सेकेंड लाइफ का कितना लंबा टाइम वेस्ट कर देता है, दैट वी डोंट रियलाइज. तो मैं आज आपके सामने ये पॉइंट रख रही हूँ. आस्क योरसेल्फ, sit with yourself, talk to yourself and write. क्या चाहिए लाइफ से, सीरियसली क्या चाहिए लाइफ से, आस्क योरसेल्फ. मैं आपके लिए आंसर नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ. आई कैन एक्चुअली जस्ट शो यू द पाथ, आई कांट वॉक विद यू. ये जर्नी आपकी है, ये लाइफ आपकी है, ये करियर आपका है. यू हैव टू ट्रेड इट. वी आर देयर टू गाइड यू, सपोर्ट यू, असिस्ट यू, मोटिवेट यू, बट जर्नी आपकी है. आपको ही इसके लिए रास्ते बनाने. तो ये पहला थॉट मैं आपको दे रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है. आज भी अगर आपको रियलाइज हो जाए, आज भी अगर आपको अवेयरनेस हो जाए, आज भी अगर आप समझ जाओ, तो आज भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो. There can be a turning point in our lives. तो ये फर्स्ट चीज मैं आपको कह रही हूँ, अपनी लाइफ का गोल आइडेंटिफाई करो. बहुतों को तो पता नहीं है, क्योंकि मैं जब क्लास में डिस्कशन करती हूँ, सब बोलते हैं हमें सिविल सर्विसेज करना है. प्रयास करना तो है, आगे क्या करो, करने के लिए क्या करोगे, स्ट्रैटेजी क्या, प्रिपरेशन क्या, प्लानिंग क्या. बात करने से तो नहीं होता. I can build castles in the air, that is not sufficient. ये पहली चीज है, मेन गोल क्या है मेरी लाइफ. अब मेन गोल को अचीव करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ब्रोकन अप. ब्रोकन अप मीन्स, मैं इसको दोबारा से समझाती हूँ. एक होता है मेन गोल.
ठीक है, सपोज आई से आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ये मेरा मेन गोल है। अब मेन गोल 5 साल बाद मिलेगा, 15 साल मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। इन द सेंस इट्स अ देयर इज अ टाइम फॉर इट। पर मेरे को पूरे अपने आज के टाइम के हिसाब से एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है मीन्स फॉर दैट मेन गोल आई हैव टू मेक स्मॉलर गोल्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगी हाउ यू कैन गो अबाउट डूइंग इट। सो फॉर बिग गोल्स यू हैव टू सेट स्मॉलर गोल्स। अब स्मॉलर गोल्स हो सकते हैं एक मंथ के लिए, फोर्टनाइट के लिए, एक वीक के लिए, एक दिन के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगी, मेरा सजेशन होगा स्टार्ट विद डेली गोल्स। when you're through with your exams, when you're through with your settings, and you have some time, take break for 1 week, and then start thinking about things which are important for you in your own life. मस्ती करना हमारा गोल नहीं होता लाइफ में। मुझे नहीं पता अगर कोई आज भी मेरे को बोले कि मैं मस्ती करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, आई डोंट थिंक दिस इज आवर गोल या here to achieve something। तो डेली गोल्स की मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करा था इस चीज के लिए। मैं अपनी एक शेड्यूल बनाती थी कि आज मुझे दिन में, ठीक है, I've done it with some of my students also and they have told me they became more productive after meeting these kind of daily schedules। तो आप डेली शेड्यूल्स में बहुत अपने लिए अच्छा काम कर सकते हो। सो आई यूज्ड टू डू, जैसे मैं रोज का अपना बनाती थी, आज वॉक करी, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करी, एवरी डे आई यूज्ड टू एक्चुअली पुट इन माय पॉइंट्स थे मेरे रोज के डेली शेड्यूल में। फिर have I studied newspaper today, and I have actually added some vocabulary to my English vocabulary every day. Have I added 5 words to it? Have I read some motivational book today? ऐसे करके मैंने 4-5 पॉइंट्स बना रखे थे। एंड ऑन अ डेली बेसिस मैं डेट डालती थी, एंड ऑन अ डेली बेसिस आई यूज्ड टू चेक, उसमें टिक करा के क्रॉस करा। मतलब मैंने उन 5 चीजों को आज के दिन में करा कि नहीं करा, आई टिक्ड इट और आई क्रॉस्ड इट। ये मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये चीज करी, एंड आई यूज्ड टू फील ये आपकी पावर बहुत बढ़ाती है। क्यों पावर बढ़ाती है? आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखते हो। आपका माइंड अनटेम्ड चल रहा है, अनकंट्रोल्ड चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जब मन करा सो रहे हैं, जब मन करा उठ रहे हैं, जब मन करा मोबाइल पे, जब मन करा फ्रेंड्स के पास चले गए, तो कंट्रोल नहीं है ना आपका माइंड पे। योर माइंड इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, मतलब योर ओन माइंड, मतलब किसी और का नहीं है। मेरा खुद का मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब आप ये सोचो, अगर मेरा खुद का मन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे पढ़ने में सपोर्ट कैसे करेगा? तो आफ्टर यू आर फ्री विद ऑल थिंग्स, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, 1 हफ्ता आपने 5 चीजें अपने लिए आज फिक्स करी, आप देखना 5 चीजें आपने आज करी, तो माइंड विल लर्न टू प्रोग्राम। आपको डिसिप्लिन करना आएगा माइंड को, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। आपको इतना अंदर जो डिसिप्लिन मिसिंग है, पावर मिसिंग है, वो सब चीजें इंक्रीज होगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी फॉर द टाइम भी, आप ये सोच लो, छोड़ दो सोचना 3rd ईयर के बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे तो नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो क्या। आई से फॉर द टाइम बिंग सब छोड़ दो और एक चीज को पकड़ लो। वो एक चीज क्या है? डेली रूटीन सेट करो। जो डेली रूटीन सेट करता है वो खुश रहेगा, उसको रोज सक्सेस की फीलिंग होगी, उसको रोज ग्रोथ की फीलिंग होगी। जब वो सुबह उठेगा उसको एक एक्साइटमेंट होगी, आज भी मुझे कुछ नया करना है, टुडे आल्सो आई लर्न समथिंग न्यू, टुडे आल्सो देयर बी सम ग्रोथ व्हिच विल टेक प्लेस। हम क्या करते हैं, पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। हमने सो लिया, हमने मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर लिया, हमने कुछ इधर उधर के आर्टिकल्स पढ़ लिए, but that was not adding anything to my skills, to my knowledge, to my learning, to my experiences। तो हम रात को सोते हैं बहुत गिल्ट फीलिंग में सोते हैं,
डिससैटिस्फाइड होते हैं। हम अपने को बोलते हैं आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करा, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। फिर जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं तो हम उसी फ्रेम ऑफ माइंड में उठते हैं विच इज एक्चुअली पोजेसिंग दैट सेम लेजीनेस, दैट सेम डीमोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड। क्यों? रात को क्या सोचा, आज मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, हम उस थॉट के साथ सोए। अब हम अगले दिन जिस थॉट के साथ उठेंगे, अब आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, आज कोशिश करता हूँ थोड़े पढ़ने का, किताब लेके बैठेंगे, सोचेंगे पढ़ता हूँ, माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा, फोकस ही नहीं बैठ रहा, कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही। 2 घंटे बीत गए, फ्रस्ट्रेट हुए, किताब बंद करा, मोबाइल उठाया, नेटफ्लिक्स देखना शुरू करा, इंस्टा देखना शुरू करा, ट्विटर देखना शुरू करा, एक और दिन ऐसे बीत गया। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? हम बहुत लंबा रेस के लिए प्लानिंग नहीं करें, बिगर गोल्स को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें। बिकॉज अगर अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है टू टेक द लीप फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद डेली रूटीन्स। तो आप डेली का शेड्यूल बनाओ। आप अगर 5 बातें 6 बातें सोचते हो आपके लिए डिफिकल्ट है, 3 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 1 से शुरू करो, पर डेली रूटीन से शुरू करो। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल्स बना के बैठ जाते हैं और डेली बेसिस पे अनप्रोडक्टिवली चलते रहते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है, तो उसमें 2 लेवल्स पे काम होता है। एक तो खुद कुछ कर नहीं रहे एंड यू सी अदर पीपल प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आई विल से गोल होना चाहिए, राइट इट, कीप इट विद यू, रिवाइज एंड रियलाइज। आई एम सेइंग कीप इट विद यू, पर मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास पावर नहीं है। पावर किसको चाहिए? माइंड को चाहिए। पावर किस चीज में चाहिए? टू डू व्हाट आई वांट टू डू। पूरी दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे वांट टू डू। द होल वर्ल्ड इज मूविंग लाइक दिस। 2 लेवल्स पे चीजें चल रही, या तो दे आर डूइंग व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग, ठीक है, मोबाइल इज एन एग्जांपल, और दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। व्हाट शुड दे बी डूइंग? दे शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ देयर गोल्स। तो 2 लेवल्स पे काम हो रहा है, या तो वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, या वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों चीजों में पावर डिप्लीट होती है, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी अनप्रोडक्टिव चीज में यूज कर लोगे, आप डिप्लीट कर लोगे अपनी एनर्जी। आपने 2 घंटा मोबाइल देखा, आपका एक पॉइंट के बाद आईज पे स्ट्रेन आएगा, ब्रेन पे स्ट्रेन आएगा, सिर पे प्रेशर आएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी थोड़ी लीकेज फील होगी, आप कहोगे लेट मी स्लीप फॉर सम टाइम। अब आपको जो पढ़ना था वो आप पढ़ नहीं पाओगे, एनर्जी तो सारी उस अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में चली गई। तो वो जो 2 चीजें हैं उनका लिंक है आपस में, there's a link between both the things. If you waste your time on unproductive things, by the time you come to productive things, तो आपकी एनर्जी लीकेज हो चुकी है। अब आपके पास एनर्जी नहीं है काम करने की। आपके पास 100 रुपीज थे, आपने उसको स्पेंड कर दिए ऑन एंजॉयमेंट। अब आपको उस 100 रुपीज की मेडिसिन खरीदनी है, तो आपके पास 100 रुपीज तो है ही नहीं। फ्रॉम वेयर विल यू बाय द मेडिसिन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ? आप नहीं खरीद सकते, तो एनर्जी डिप्लीट हो गई। अब आप कहते हो मैं पढ़ लूं, आई शुड बी एबल टू स्टडी, आई शुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, I should be able to do something with respect to my goal. It doesn't happen. It cannot happen. तो मैं इसलिए एक सजेशन आज आप सबको दे रही हूँ, कीप योर गोल्स विद यू। वी विल डिस्कस इट्स अटेनमेंट आफ्टर सम टाइम। फॉर द टाइम बीइंग, स्टार्ट विद योर डेली शेड्यूल्स। उस डेली शेड्यूल्स में आपका सक्सेस कितना है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। Because if you are becoming successful to the extent of 70-80%, means you are moving in the direction of achieving self-control to some extent, disciplining the mind to some extent। तो सारी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, which is really going to help you। ओके, तो ये आपको मैंने सेकेंड पॉइंट बताया। फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू योर मेन गोल। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू योर स्मॉलर गोल्स।
और मैं इसको स्मॉलर गोल्स को भी ब्रेकअप कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर डेली रूटीन्स। आप डेली रूटीन्स में एक्सपेरिमेंट करके देखो, इफ यू सक्सीड देयर देन मेक इट वीकली, देन मेक इट फोर्टनाइटली, देन मेक इट मंथली। और उसमें जो आपको सक्सेस मिलेगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक दिन बहुत प्रोडक्टिव रहते हो, सपोज आपने 5 थिंग्स का टारगेट आज बनाया एंड यू अचीव इट, फर्स्ट थिंग इज यू विल बी वेरी मोटिवेटेड नेक्स्ट डे टू डू समथिंग मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेन है जो चलती है। इफ यू आर अनप्रोडक्टिव, you will continue to be unproductive day after day. If you are productive today, your motivation today will give you more motivation tomorrow. So it's like a chain which works. आज की मोटिवेशन, कल की मोटिवेशन, परसों की मोटिवेशन, there's a link that works here. ये सेकेंड पॉइंट मैं आपको ऐड कर रही हूँ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, I should have an awareness of what? My strengths and my weaknesses. मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज की अवेयरनेस है। This is very important. I'll tell you what is the awareness of this. मेरी strengths क्या है, ठीक है? कोई लर्निंग बहुत अच्छी कर सकता है, किसी के राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कोई एक बारी चीज पढ़ता है रजिस्टर हो जाती है, ठीक है? किसी के मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। We all have some set of strengths with ourselves. उसकी आइडेंटिफिकेशन मुझे है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मुझे है। That's the first thing. अपने से ये पूछो। क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पर आज मैं क्वालिटीज की डिस्कशन नहीं कर रही, मैं आपकी स्ट्रेंथ्स की डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है? Somebody is good in mathematics, somebody is good in English, somebody is good in descriptive papers like history and political science. आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बेसिस पे आगे बढ़ोगे। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता है तो आप उनको एक्सप्लॉइट करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एक लिस्ट। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, हम लोगों को बहुत कम अवेयरनेस रहती है अपनी स्ट्रेंथ्स की और क्वालिटीज की। सो अगेन यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड you have to see your strong areas. You have to see your strong areas. ये strengths की point आपको first point बताई। दूसरी, weaknesses की awareness, ठीक है? अब आप कहोगे weaknesses की तो हमें बहुत awareness रहती है, because day in day night, day in day out, we think about our weaknesses. हम भी सुनते हैं, अपने को सुनाते हैं, लोग भी हमें सुनाते हैं। My family members will tell me, आप में तो ये भी ठीक नहीं है, you are not good in this, you can't do this. Our family members and my own self also knows my own weaknesses, but I'm highlighting one very important point. There would be one weakness which is going to overshadow all your strengths. वो एक वीकनेस होगी which is going to overshadow all your strengths. आप में 10 क्वालिटीज हैं, quite possible, या आप में 20 क्वालिटीज हैं, उसमें एक ऐसी वीकनेस होगी वो आपके सारे स्ट्रेंथ्स को वॉश आउट कर देगी, सारी आपकी एफिशिएंसी को न्यूट्रलाइज कर देगी। आई नो मदर्स का नॉर्मली होता है, नॉर्मली से मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इज वेरी ब्राइट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी शार्प, बट इज नॉट कंसिस्टेंट। अभी जो कंसिस्टेंसी वाली क्वालिटी होती है which that person does not have, it can have major implications for success, क्योंकि सक्सेस में some degree of consistency you require, and if you don't have that consistency then there would definitely be problems in achieving success. मैं आपको कंसिस्टेंसी की एक एग्जांपल बता देती हूँ। I don't know how many of you have actually read about sports person, और उसमें भी I will emphasize on Olympic players,
if you read about Olympic players, for that 40 or 45 seconds race, they have invested 15 years of their life. उस ओलंपिक रेस में to come first, it is for some seconds. They have invested almost 10 to 15 years of their life. और अगर आप उनके routines पढ़ो, on a daily basis, they spend 4 to 6 hours on their practice, on building up their bodily stamina, on reaching that target, on practicing how to speed up, to learn the tricks of the game. 15 years, every day for 4 hours. उस इंसान ने वो सेम काम करे. That person has persisted on with that same thing. If you talk to sports person, they'll tell you if they give a break, they lose their bodily stamina. उसका रिजल्ट होता है जो हम एक दिन उनका रेस देखते हैं, that one day, and they actually make it history, they make it a success story, and everyone talks about it. उसके पीछे की 15 years की इन्वेस्टमेंट किसी ने पढ़ी. This is how, what is the importance of goal? If you ask me, this is the importance of goal. 15 years he invested because that goal was so dear to him or her. 15 years he spent on that. So this is my vision, this is my goal, this is my dream. Then I need to know where I stand and how I can move with it. I definitely need to know this. ठीक है, तो ये मैंने गोल सेटिंग के लिए आप सबसे बात करी. I will now end with a story. Now I'll end with a story which I read. Again, the importance of goal which it was putting forth. Once a professor gave a test to the students. Questions were of three types. First question was for 50 marks, which was difficult. Second question was for 40 marks, which was average. And third question was for 30 marks. It was easy. Professor said you have to select one question, either 50, 40 or 30, only one question, and you have to attempt only one question. Out of 3, with difficulty level from difficult to easy, one question had to be attempted and submitted to the professor. So after the professor collected the answer scripts, evaluated it, and he returned them the sheets. So students were very shocked to see the marks because the professor did not evaluated them on the basis of what they wrote. So the student who actually attempted the difficult question got 50 marks. The student who attempted the question for 40 marks got 40 marks. And the one who attempted the easiest, he got 30 marks. So they asked the professor, what kind of evaluation is this? How have you corrected these answer scripts? Professor replied, I was not testing you for your answer writing. I was not testing you for your knowledge skills. I was not testing you for your preparation. I was testing you for your goal. Why? If you shoot for the moon, if you actually set the goal of reaching the moon, if you don't reach the moon, you will at least reach the stars. You reach somewhere near it. So I was testing you for the goal. So if you have selected the difficult question, means you have a high goal. So you will be somewhere near the goal. It's not important whether you have the capacity to reach there or not. Importance is, where do you set your goal? As someone rightly said, success is not going to lower its standard for you. No one said 80% is called success. No one ever said. You have to raise your level for success. You have to reach 95%, 98%, 99%. Success will not come to your level. You have to reach to the level of success.
So this is what I wanted to briefly talk about. Though the story on success is still not complete, there are many other dimensions in addition to hard work. One thing which I've discussed today is goal setting. Second thing which I've emphasized a lot in all these sessions is the role of faith, belief in the self. These are the two things which I've talked about. Now in this series, there'll be some more aspects related to success which I take up in the coming sessions. So that's what I plan to do. If there are any questions at your end today, please let me know. गुड मॉर्निंग मैम। मैम, जब हम किसी भी बड़े गोल के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं तो एक टाइम होता है जब वो बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स से ढूंढ रहे होते हैं या पेरेंट्स से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब वो हमें वो मेंटल सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसकी हमें कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। मान लीजिए कि कोई इंसान अगर अपने किसी फ्रेंड पे डिपेंडेंट है, बट वो फ्रेंड उसको सपोर्ट से ज्यादा उसको वो टॉक्सिसिटी दे रहा है और उसका गोल ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से, तो मैम उस केस में क्या करना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से मेंटल सपोर्ट से उस चीज को हटाना कैसे चाहिए? क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसके पास बहुत स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट हो। तो मैम उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी ज्यादा सही होती है? Look, Shivani, in goal setting, one thing has to be clear for every individual. Company is very important. You can't say I want to achieve success and then you stay with people who are actually taking you away from your goal. This is going to be two opposite things and they will not go together because soon, today or tomorrow, those people will pull you down. So one thing you have to understand, if these people are not supportive of what you want to do in your life, then they should not be part of your life. Company is very important for goal setting. Its importance is very, very crucial. It cannot be de-emphasized. This is first point, very important. Secondly, if I don't have that kind of mental support, then definitely I can actually get some inspiration by listening to some inspirational videos or something like that, which can help me. That is much better than all listening to motivational music or reading some motivational stories. That is much better than a company which is going to later pull me down. That's advisable. That's advisable. ओके, थैंक यू मैम। It's not easy actually to stay with people who are not there to achieve something in life. What will you do with those set of people? Today or tomorrow, they will also actually make you distance yourself from your goal. Ask yourself. You can stay with people, but when it comes to goal, you have to be very selective. Very, very selective. And if you can't be selective, then it's good to distance yourself temporarily for your goal from these people and focus on your studies. Then for some time at least, reduce the extent of conversations with these people. That's the best strategy. They cannot coexist. So success as your goal for achieving success, and these set of people who are not serious about their goal, they cannot coexist. It's never ever possible. थैंक यू मैम। Yeah, sure. Any more questions you people have?